पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। शब्दार्थ। पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो कोई, मैं मुझको, भक्त्या भक्तिपूर्वक, प्रयच्छति भेंट करता है, तत् वह, अहम मैं, भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित, अश्नामि स्वीकार करता हूँ, प्रयतात्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट देने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्हें ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते हैं। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मार्गीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आश्चर्य यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद देने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So again the topic is similar to yesterday's. Who is here who was on the yesterday's evening class? So some things can overlap, so just so I was told that the topic is written like the Valentine's Day special. So I will ask you, who of you have never celebrated Valentine's Day in your life? Okay, good. I'm not alone. Okay, so let us speak about the real stuff. We will speak about the real love. People are mad with love. Yeah, they love and then don't love. They love again, they again don't love. But they want to love. But the real love is actually escaping their life. Real love is on the level of the soul. Of course, we as humans are created in such a way that we are attracted towards
opposite sex. जो मनुष्य को इस तरह बनाया गया है कि वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते ही हैं। We don't need to be taught about it. क्योंकि हमें इसके लिए हमें कोई पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। It's not that parents they have to explain. Actually, you know, there is another species of life. It's called a woman, and you should like it because it has nice features, and you should get little attracted towards that kind of human. माता पिता को बताना नहीं पड़ता कि एक योनि है जिसको स्त्री बोलते हैं, जो सुंदर है जिसके प्रति आपको आकर्षित होना चाहिए, तो ये सब नहीं बताना पड़ता। It's natural. ये स्वाभाविक है। Like the magnet. जैसे चुंबक। How you say magnet? Chumbak. Like. So, and it's not only this, but senses, they have their specific objects which they are attracted towards. So, and in different forms of life, we are attracted, we get specific set of senses, and with that set of senses, there is a specific set of sense objects we will be attracted to. जो भी हमें योनि प्राप्त हुई है, तो उसके अनुसार हमारे कुछ इंद्रिय होंगे और इंद्रियों के संपर्क इंद्रियों के लिए कुछ इंद्रिय विषय होंगे जिसके प्रति इंद्रियां स्वाभाविक आसक्त होंगी। So if you are born as a frog, यदि आपका एक मेंढक के रूप में जन्म हुआ, and the she frog comes by, और पास से एक मेंढकी गुजर रही होता है, then you will be very attracted. तो आप बहुत आकर्षित होंगे। Oh, such a nice color. कितना सुंदर रंग है। So nice, green. कितनी हरी हरी है। And such eyes, beautiful big eyes. कितनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं। And these sounds, I mean, she's singing so nicely. और कितना सुंदर गाती है ये। So you will be attracted, and you will think, oh, this is the Miss of the universe. जो मेंढक होगा बहुत आकर्षित होगा। Or at least Miss of India. इसको तो मिस यूनिवर्स बनना चाहिए था, या फिर मिलियनर बनना ही चाहिए था। So I want to marry her. मैं इससे शादी करना चाहूँगा। Of course, frog, they don't have any marriage. खैर मेंढकों की शादी नहीं होती। And then we, in the human form of life, of course, we are not attracted towards frogs. लेकिन कोई मनुष्य है वो तो किसी मेंढकी से आकर्षित नहीं हुआ। We don't consider them beautiful. हमें तो वो सुंदर नहीं लगी। It's an interesting creature. वो एक अच्छा मतलब आकर्षक जीव है। But it's not like very much thrilling to our senses. Oh, such a nice frog. It's so nice. लेकिन मनुष्य को वो अपील नहीं करेगा, ओह कितना सुंदर मेंढक है, मेंढकी है। But if a nice, beautiful girl walks, passing around, then our, senses get active. लेकिन अगर एक सुंदर लड़की पास से गुजर जाए, तो फिर इंद्रियां विचलित होंगी। And opposite for the girl, if they see nice boy, handsome, then they are also attracted. और कोई लड़की किसी सुंदर लड़की को देखेगी तो फिर वो आकर्षित होगी। But it is, the soul is there in the frog, and the same soul is there in the human. आत्मा तो वही है, चाहे मेंढक के शरीर में, चाहे मनुष्य के शरीर में। And according to our karma, we are getting specific body, and we are conditioned by that specific body and the mentality which goes with that. हमारे कर्म के हिसाब से हमें एक शरीर मिलता है, और शरीर में फिर जो भी हमारी मानसिकता रहती है, उसके हिसाब से हम गवान रहते हैं। When we get a frog body, when we see a fly, we think, oh, such a nice feast came. जब हमें मेंढक का शरीर मिलता है और कोई मक्खी गुजर रही होती है, तो हमें लगता है वो बहुत बढ़िया फीस्ट है। And we have nice long tongue, and we can and we can. And when we are humans, we have different things which we like to eat. Hopefully. Of course, there are people who eat these frogs, poor frogs. We don't do that. I hope nobody here does that. But if we see some gulab jamun, or some idli sambar, it's not local, yeah, idli, or is it? Do people here cook idli? And sometimes it's not South India anymore, yeah? But still, that's okay. So we will be attracted to these.
इनकी सांबर की तरफ। But this means when we get some other body, maybe higher than the human body, we can get a body of a devata, of the inhabitant of the heavenly planets. हमें मनुष्य से भी ऊंची योनि प्राप्त हो सकती है, जैसे देवताओं की स्वर्गलोक में। And in the same way as we do not consider a frog to be particularly beautiful, the demigods also they don't consider us humans to be particularly beautiful. तो जैसे हमें मनुष्य को मेंढक अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते, वैसे देवताओं को मनुष्य मेंढक जैसे लगते हैं, कोई सुंदरता नहीं है। They can perceive us in the similar way as we perceive these frogs. तो जो धारणा हमारी मेंढकों के प्रति है, वैसे ही देवताओं की हमारे प्रति है। There is not many beautiful things, enjoyable things about this body. तो इस शरीर के बारे में कुछ अच्छा है नहीं, कुछ एंजॉय करने लायक नहीं है। So under the illusion we think, oh, this body is nice or that body is beautiful. तो ये मोह के वशों में हम ऐसा सोचते हैं, ये शरीर सुंदर है, अच्छा है। But we should know this is an illusion of Maya. तो हमें समझना ये माया में भ्रमित करती है। It's a bag made of skin. खाली एक बस्ता है, स्किन की इसमें लेयर है। And inside there are different things like bones, mucus, intestines, muscles, blood. तो उसके अंदर, उस बैग के अंदर क्या है? हड्डियां हैं, खून है, फिर इंटेस्ट आते हैं, सब गंदी चीजें। And if you just take this upper layer, the skin off, it will look horrible. तो यदि त्वचा की थोड़ी सी चमड़ी उतर जाए तो फिर आप उसको देखना नहीं चाहोगे, इतना खराब है वो अंदर का माल। And all the substances inside, they are not nice. तो जो भी अंदर भरा हुआ है स्किन के अंदर, वो सब खराब है, अच्छा कुछ नहीं है उसमें। We realize that quite often, at least every morning, we can see not very nice things. तो सुबह हर किसी को साक्षात्कार होता है जब जाते हैं शौच के लिए। So this is quite graphic description, but this is given in Shastra for us to understand the reality. तो ग्राफिक लग सकता है, पर ये वास्तविकता है, शास्त्रों में इन सब का उल्लेख है। Tendency is, oh, don't speak like this, you're spoiling the atmosphere we have. तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, सब मजा खराब हो जाएगा, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। There is something beautiful on humans. There is something beautiful in us. तो मनुष्यों में तो बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, but only when the soul is inside. लेकिन वो सुंदरता तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है। Then that energy from the soul makes the body to look beautiful to some extent. तो आत्मा की वजह से ही, इसकी शक्ति के कारण जो शरीर में कुछ सुंदरता जैसा लगता है। But when the soul leaves the body of anyone, even the Miss Universe, will look horrible. We don't want to see it. लेकिन अगर एक बार आत्मा शरीर को छोड़ दे तो फिर वो मिस यूनिवर्स का शरीर क्यों ना हो, तो बहुत खराब हो जाएगा। We don't want to touch it. हम इसको देखना, छूना भी नहीं चाहेंगे। Because it completely changes when the soul goes away. क्योंकि आत्मा के शरीर छोड़ते ही शरीर पूरा बदल जाता है। So in this way we are attracted to many things in this world and we call this as love. तो इस प्रकार हम अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं और इसको हम फिर प्रेम का नाम दे देते हैं। We can love many things. तो हम बहुत सारी चीजों से प्रेम कर सकते हैं। We can love some good food, हम अच्छे or some place, our favorite place which we like to visit. तो हम किसी अच्छे खाने से हमारा प्रेम हो सकता है, किसी स्थान से जहाँ पे हम जाना चाहें। But mostly when we speak about love, we mean attraction between two opposite sexes. पर सामान्यतः जहाँ प्रेम की बात होती है तो जनरली स्त्री पुरुष विपरीत लिंग के बीच जो प्रेम, तथाकथित प्रेम, This is like considered as a peak of enjoyment, peak of. तो उसे तो इस प्रकार का जो स्त्री पुरुष का प्रेम है उसको एंजॉयमेंट की पराकाष्ठा बताया गया है। But let us remember rather who is really worth of our love. तो हम समझे, हमेशा हम समझने का प्रयास करें कि कौन वास्तविक में हमारे प्रेम के पात्र हैं And who really loves us. और कौन हमसे वास्तविक प्रेम करते हैं। Actually there is somebody who is always with us. तो एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है।
not only in this life, but even if we enter the body of a pig, he will be still there with us. तो ना केवल इस मनुष्य के शरीर में बल्कि अगर हम सूअर के शरीर में भी जाएंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। He is our best friend. तो वो हमारे असली परम मित्र हैं। And he will never leave us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। Never means never. कभी नहीं मतलब कभी नहीं। Even we completely forget him, तो भले ही हम उनको भूल जाएं हमेशा के लिए, or we even hate him, भले ही हम उनसे नफरत करें, still he will be there with us तब भी वो हमेशा हमारे साथ है and waiting और वो राह देख रहे हैं when we again turn towards him and start to remember, oh, actually we have a relationship. वो राह देख रहे हैं कब हम उनकी ओर मोड़ेंगे, अपने आप को मोड़ेंगे और ये याद कर पाएंगे कि मेरा उनका एक संबंध है। And that is the Lord in the heart of all of us. और वो भगवान जो कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में, Lord in the form of Paramatma is present in the heart of every living entity. तो भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में, and he is the best friend to all. और वो सबके सबसे शुभ चिंतक है। So this is real love. तो ये वास्तविक प्रेम है। And he has the capacity to love everyone. और वो सबसे प्रेम कर सकते हैं। We don't have this. हम तो ऐसा नहीं कर सकते। With how many people we can have a relationship? तो कितने लोगों के साथ आप संबंध बना सकते हो? Either friendly, conjugal, parental. With how many people we can relate? तो चाहे मित्रता का संबंध हो या दाम्पत्य का संबंध हो, कितने लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं आप? It is very limited. तो कुछ ही सीमित लोगों के साथ। We cannot emotionally share all our lives and emotions with millions of people and to have personal exchange with all of them. तो हम व्यक्तिगत रूप से सबके साथ संबंध नहीं बना सकते। We are limited to few. We can know many, but real exchange is there only with few. तो हम बहुत लोगों को जान सकते हैं, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोगों के साथ हम संबंध बना सकते हैं। And many people we will forget. बहुत लोग भूल भी जाएंगे। That happens to me regularly. मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मैं भूल जाता हूँ लोगों को। Because many people remember me because I'm quite, tall and little distinct, especially in India, and they remember me from different places. And they, oh, Hare Krishna, Sankirtana Prabhu, how are you? And I say, okay, Hare Krishna, and who are you actually? तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मतलब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा संकीर्तन प्रभु, तो लेकिन मैं याद नहीं कर पाता कि मैं कौन मिला, मैं उनसे कब मिला था, कहाँ मिला था। So we are limited, but the Lord, He is unlimited in His capacity to have a relationship. तो हम सीमित हैं, लेकिन भगवान असीमित है अपने संबंध बनाने की कैपेसिटी में। So we can all have relationship with Him, and He is able to manage all the relationships which He has with everyone. तो हम भगवान सबके साथ संबंध बना सकते हैं और उस संबंध को कैसे मैनेज करना है भगवान जानते हैं। And this shloka, particular shloka, speaks about how we are supposed to be devoted to the Lord and how we are supposed to love Him. तो ये श्लोक बताता है कि कैसे हमें भगवान के प्रति समर्पित होना और कैसे उनसे प्रेम विकसित करना है। And a specific word mentioned in this shloka 2 times, which is very known word, which you all know, is bhakti. तो इस श्लोक में एक शब्द जो कि 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जो सब आप जानते हैं, क्या है वो शब्द? भक्ति। And strictly speaking, bhakti is meant only for Vishnu, for Bhagavan, for Krishna. तो भक्ति है वो एकमात्र कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, भगवान के लिए होती है। Because only in this relationship the real meaning of bhakti can really actually develop. तो वास्तविक जो भक्ति वो भगवान के साथ में उसका अर्थ है। So bhakti is translated often as a devotion. तो भक्ति को अक्सर भक्ति कहा गया है। You have the same word, yeah? Bhakti is devotion is bhakti. तो भक्ति को इंग्लिश में डिवोशन कहा गया। Okay. Or also love. या प्रेम। When we speak about bhakti yoga, some people say it's a yoga of devotion and some people say it's a yoga of love. तो जब भक्ति योग ऐसा प्रयोग किया जाता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये
प्रेम का योग है या फिर डिवोशन का? And in different circles of people, especially those who are a little spiritually minded, this word yoga of love or devotion is becoming quite popular. तो कई ऐसे लोगों में जो कि थोड़े बहुत उन्नत हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो उनके लिए जो भक्ति योग है, योगा ऑफ लव या योगा ऑफ डिवोशन, तो उनके लिए काफी पॉपुलर है उन ऐसे लोगों में. But many spiritual teachers or gurus, they don't really specify for whom this love is supposed to be directed to. तो कई ऐसे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि ये नहीं जानते कि ये जो प्रेम है वो किसकी ओर होना चाहिए, किससे हमें प्रेम करना है. They say these fancy words like divine love, love of the divine, and devotion. You have to feel the devotion. तो वैसे वो हवा में बातें करेंगे, डिवाइन लव, लव ऑफ डिवोशन, आपको उसको फील करना है, तो सब आसमानी बातें करेंगे. But we need to be a little more specific here. लेकिन हमें बिल्कुल स्पष्ट होना है. Because if we say this is a yoga of love, I mean, in every head, some other definition of that yoga of love will appear. तो मैं बोलूँ भक्ति योग मतलब योगा ऑफ लव, तो हर कोई व्यक्ति के दिमाग में उसकी एक अलग परिभाषा बन जाएगी. We will have yoga of love with my girlfriend. तो मैं योगा ऑफ लव करूँगा अपनी प्रेमिका के साथ. So this is not bhakti yoga. तो ये भक्ति योग नहीं. This is kama and not yoga. What is that? तो ये काम है जो कि योग नहीं हो सकता. We cannot call it yoga. Yeah? This is काम को योग kama yoga does not exist. Does not okay. Yoga means connection with the Lord. तो योग मतलब भगवान के साथ जुड़ना. But kama is disconnection from the Lord. और काम तो हमें भगवान से तोड़ देता है, अलग कर देता है. So we need to be specific here, and we have to understand that devotion means devotion to the Supreme Lord, to Krishna. तो भक्ति मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति. And love also is meant for Krishna. तो प्रेम भी एकमात्र कृष्ण के लिए होता है. And then actually the real love in this relationship can develop, because this is the love between our real selves as spiritual souls and the real Lord, Bhagavan Shri Krishna. तो ये जो प्रेम है ये वास्तविक है, तो एक जीवात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बीच. In this world, so-called love is always, it's contaminated by this bodily concept of life, and by this covering, I mean, by this, how to say, by that we are, as we explained before, we have this body in which we are, and we are automatically attracted to some other body, but this is not pure, this is just the mechanism of the body. तो इस भौतिक जगत में जो भी तथाकथित प्रेम है, तो वो देहात्म बुद्धि के कारण कलुषित है. So Krishna here explains that devotee who is loving him, he will offer him different things. कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी भक्त उनसे प्रेम करते हैं तो वो उनको अलग अलग वस्तुएं भेंट करते हैं. And I don't think you will find this kind of description in any other spiritual book in the world. तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और आध्यात्मिक पुस्तक में इस प्रकार का वर्णन मिले. That you are going to feed God with some foods. कि आप भगवान को कुछ पदार्थ खिला रहे हो. You cook for God. आप भगवान के लिए कुछ पका रहे हो. And English is not my first language, so I don't know how this saying is put in English, but there is a saying in our country in Czech that love goes through the stomach. You have something similar? तो ऐसे एक इंग्लिश में कहावत है, love goes through the stomach. So that means that when you love somebody, like you have a husband and wife, and when the wife loves the husband, she will cook nice food for the husband.
तो जैसे अगर पति पति में प्रेम है तो फिर पत्नी पति के लिए कुछ बनाएगी, कुछ कुकिंग करेगी। I hope at least in India the wives still cook. तो मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि भारत में अभी भी जो स्त्रियां हैं वो खाना बनाती है। Many girls in Europe when they are getting married, they don't know how to cook. तो यूरोप में तो ऐसा है कि लड़कियों की शादी की उम्र हो जाती है, शादी होने वाली होती है, लेकिन उनको कुछ खाना बनाना नहीं आता। They have this microwave oven and they put something inside, you know, and in 2 minutes it's heaten and okay, my love, my darling. तो उनके पास माइक्रोवेव ओवन है, तो जो भी उनको खाना है वो बाहर से आया हो, बस इसको ओवन में गर्म कर दिया और फिर कहा है मेरे डार्लिंग खा लो। Or they will question why women should cook, why not men? या फिर स्त्रियां ऐसा प्रश्न करती हैं कि हमें क्यों खाना पकाएं, पुरुष भी तो बना सकता है। At least 50-50. या 50-50 कर लेंगे। Or men little more. या फिर पुरुष ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा टाइम। Of course, many women they cook. My mother always cooked at home. मुझे याद है मेरी माता हमेशा बनाती थी खाना। My father he cooked maybe once a week. मेरे पिताजी हफ्ते में एक बार बना देते थे। Don't ask me what they cooked. तो मुझसे मत पूछिए वो क्या बनाते थे। So when the wife is cooking for the husband, then some bond is created and the love is so-called love in this case, but anyway, it's becoming stronger. तो जब पति अपनी पति के लिए कुछ बनाती है, उनके बीच जो प्रेम है तथाकथित प्रेम, वो जो बॉन्ड है वो बढ़ेगा। And actually it is interesting that food is the thing which we associate the most closely with, because we are taking it inside. तो खाना एक ऐसी चीज है जो कि हम सबसे ज्यादा जिससे हम संग करते हैं, क्योंकि खाना अंदर जाता है ना। So it's just very big part of our lives. We need to eat several times a day. तो खाना मतलब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हमें दिन में कई बार खाना पड़ता है। And the person who cooks for us, then the consciousness is in that food and it will influence our thinking, our mentality. तो जो भी खाना बनाने वाला है तो उसकी चेतना उस अन्न में प्रवेश होती है और फिर हमारे अंदर भी प्रविष्ट होती है। Therefore the food from the mother is so good and the food from the how to say school kitchen is not that tasty. तो इसलिए जो माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना है तो बहुत वो अच्छा है, और जो मेस का होटल का खाना है Because टेस्टी नहीं, mother will cook with love. क्योंकि माँ प्रेम से बनाती है। And here we have cooking for Krishna. और यहाँ पर हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं। So in the same way as the wife loves her husband and she cooks for him what he likes and not what he does not like, unless she wants to help him to become thinner, तो जैसे to lose some weight. तो जैसे एक स्त्री जो उसके पति को पसंद होगा तो वो बनाएगी, तो वो ऐसा नहीं बनाएगी जो उसको पसंद ना हो। हाँ, अगर वो अपने पति को भूखा रखना चाहती है, पतला करना चाहती है, तो फिर वो ऐसी चीजें बना सकती है। But this will be also out of love. तो ये भी प्रेमवश हो जाती है उसका So पति in the मोटा ना हो। similar way, we are going to offer Krishna what he likes. तो उसी तरह हम भी कृष्ण को वही अर्पण करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। And there is no meat in the description, तो यहाँ पर कहीं मांस का उल्लेख नहीं आता, no alcohol, कहीं शराब का उल्लेख नहीं, nothing like this. तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। It's pure sattvic things which we offer to Krishna. तो ये सब सात्विक पदार्थ हैं जो कृष्ण स्वीकार करते हैं, And these he will accept. तो ये सब वस्तुएं कृष्ण स्वीकार करते हैं। And in this way, the bond which we have towards Krishna will increase by this process of offering him nice food. तो इस प्रकार से जब हम भगवान को उनका मनपसंद अर्पण करते हैं वस्तुएं, तो हमारा उनके साथ बॉन्ड बढ़ता है। And of course, when the wife is cooking, it's not that the husband will eat everything and the wife remains hungry. तो ऐसा भी नहीं होता, अगर कोई पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया तो पति सब कुछ खा जाएगा और पत्नी को भूखा रहना पड़ेगा। Also, when we cook for Krishna, it's not that he will finish everything and we have to starve.
तो उसी तरह जब हम कृष्ण के लिए बनाएंगे तो ऐसा नहीं कृष्ण सब कुछ खा जाएंगे और फिर हम भूखे रहेंगे। He will spiritually take the food, तो भगवान accept it, तो भगवान आध्यात्मिक रूप से उसको ग्रहण करेंगे and he will sanctify it, and this food will become Krishna prasadam. तो भगवान उसको पवित्र कर देंगे और फिर वो जो भोग है वो कृष्ण प्रसाद बन जाएगा। And in this way, Krishna very mercifully arranged the situation that we need to eat when we are in this body, but we can eat His mercy. तो जब तक ये शरीर है तो हमें कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी प्रसाद के रूप में कृष्ण अपनी कृपा हमको दे रहे हैं। And we were also always taught as young bhaktas, young new devotees, the more prasadam in, the more maya out. तो जब हम नए नए भक्ति में जुड़े थे तो हमें सिखाया जाता था मंत्र, जितना प्रसाद अंदर जाएगा उतनी माया बाहर निकल जाएगी। Although in general is not very much recommended to overeat. हालांकि ऐसा निर्देश अच्छा मतलब ये अच्छा नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा खाएं। For devotees, especially for the beginners, it's actually very much recommended. लेकिन जो बिल्कुल नए नए जुड़े हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी संस्कृति है कि वो ज्यादा खाएं। But only prasadam. लेकिन प्रसाद केवल प्रसाद, not other stuff. You know, you go to the bakery and I overeat. It was recommended by that European guy. तो ऐसा नहीं आप बाहर दुकान पे जाएं और आज तो हमने सुना था कि ज्यादा खाना है तो सब दुकान खा जाए, नहीं, खाली प्रसाद ही। It shouldn't be taken. Prasadam shouldn't be eaten like normal food with that sense gratification spirit. I will enjoy this food and I will fill up my belly and I will then lie down and collapse. तो प्रसाद को ऐसे भोग की भावना से नहीं लेना हूँ कि अब बढ़िया अभी तो टाइम आ गया, अब मैं सब खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरा भर लूंगा, ठूस लूंगा। We take prasadam in the spirit of devotion, of worship, with understanding this is the mercy of Krishna, and like that we are accepting it. तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भक्ति भाव के साथ, इस चेतना के साथ कि ये कृष्ण की कृपा है और कृष्ण कृपावश मुझे प्रदान कर रहे हैं। And we know, and we are eating it with or honoring it with understanding this is going to purify us. तो इस समझ के साथ कि इससे मेरा शुद्धिकरण होगा। And when we with my fellow young bhaktas in 20 years, 25 years ago, when we started to eat prasadam, we just lost completely the taste for the normal food. तो मेरे साथ एक भक्त थे यूरोप में, तो जब उनको प्रसाद का उन्होंने टेस्ट किया तो उनकी जितने भी गलत आदतें थी उल्ट-पटांग खाने की सब खत्म हो गई। And for sure we completely started to hate anything non-vegetarian. We just couldn't understand how we could eat it before. तो फिर हमारी नॉन वेज देखने की भी इच्छा नहीं होती थी, हम हैरान होते थे कि हम कैसे खा सकते थे नॉन वेज। And we know Srila Prabhupada, when he was preaching in the beginning in New York in 1966, he was personally cooking for those hippies who were coming there for the programs. Prabhupada was personally cooking for them big feasts. तो जब श्रीला प्रभुपाद 1966 में न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे तो जो हिप्पीज आते थे प्रभुपाद खुद अपने हाथ से उनके लिए प्रसाद बनाते थे। And he was feeding them like anything. He was cooking the prasadam, serving prasadam, and then he was cleaning the kitchen. तो प्रभुपाद रसोई करते थे, कुकिंग करते थे, उसके बाद सबको खिलाते थे और उसके बाद फिर पूरा बर्तन धोते थे, किचन क्लीन करते थे। Of course, later then started to help him. फिर बाद में वो उनकी सहायता करने लगे, प्रभुपाद की सहायता करने लगे। In the beginning, they were kind of dull, Americans. They did not even realize that Srila Prabhupada had to clean the pots after they go. शुरू में थे वो मतलब इतना दिमाग नहीं था, तो वो आते थे और बस खा के चले जाते थे। उनको कभी ऐसा विचार भी नहीं आया कि ये सब क्लीनिंग भी करनी रहती है जो प्रभुपाद अकेले करते हैं। So this was also the loving care of which Srila Prabhupada had towards his disciples and followers. तो ये प्रभुपाद का प्रेम है उनके अनुयायियों शिष्यों के प्रति। Minutes more I can speak, or with questions? With questions. Okay, so I will.
Okay, so till 40, yeah? Or till 35? Okay, okay. Okay, so any questions? किसी का कोई प्रश्न? Yes. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. It is said India is very spiritual country, but if I ask about Czech Republic where you come from, so is there also that enthusiasm about Lord Krishna there? Yeah, so the question is, if in Czech Republic, if there is an enthusiasm about Lord Krishna. Yes. तो प्रश्न है कि जैसे भारत तो एक आध्यात्मिक देश है, तो क्या आपके देश चेक रिपब्लिक में भी लोग कृष्ण भक्ति अपनाने के लिए उत्साही हैं? So how to tell? Here in India there is an enthusiasm about Krishna, but not everyone. तो भारत में उत्साह है, भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन हर कोई तो भक्त नहीं है. So in our country there is also some enthusiasm about Krishna, but it's not a general thing. तो इसी तरह हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो भक्ति के प्रति उत्साहित हैं, लेकिन सब तो नहीं. As I also told yesterday, for us to have such a crowd for a program, this is like bigger than our Janmashtami. तो अभी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उतने तो हमारे वहाँ जन्माष्टमी में भी नहीं आते. So for our Sunday program, we will have like this group here, maybe 30 people, 40 people, 50 people maximum. वहाँ पर संडे प्रोग्राम में 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आ जाते हैं. So it takes a lot of preaching, a lot of effort to devotees to find the souls who are ready to accept Krishna. तो वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें ऐसे आत्माओं को ढूंढने के लिए जो कृष्ण से जुड़ना चाहती हूँ. But on the other hand, there are quite a few people who are really attracted to Krishna once they start to read about it and like that. तो ऐसे भी लोग हैं जो कि कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, एक बार वो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने लगते हैं. But for them it's all very new. पर उनके लिए ये नई वस्तु है कृष्ण भक्ति. You all knew Krishna before you came to this temple. लेकिन Most आप probably. At least some concept was there. लेकिन आप सब तो यहाँ मंदिर आने से पहले भी कृष्ण के बारे में जानते थे. But if we approach standard Western person in Czech Republic or other countries and tell him this is about Krishna, so who is that? लेकिन पाश्चात्य जगत में अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाएं प्रभुपाद के ग्रंथ लेके और बताएं उनको कि ये कृष्ण के बारे में, तो पहला ही प्रश्न होता है उनका, ये कृष्ण कौन है? But on the other hand, actually, devotees of Krishna actually in Czech Republic are quite known to the people. लेकिन हमारे चेक रिपब्लिक में भी जो कृष्ण के भक्त हैं वो काफी फेमस है, लोग जानते हैं वहाँ के कृष्ण भक्ति के बारे में. And we are known for our food a lot. हम जाने जाते हैं अपने प्रसाद के लिए. Because devotees, they have different restaurants with Krishna Prasadam and people really like it and appreciate it. तो हमारे अलग अलग रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे कृष्ण प्रसाद का वितरण होता है, तो काफी लोग आते हैं. And they also like, I mean not all of them, but many people, they like our singing in the streets. और कई लोगों को हमारा जो सड़कों पे कीर्तन करना है, नगर संकीर्तन बहुत पसंद है. And yeah, and we are also selling a lot of books, Bhagavad Gitas and other books. तो हम कई सारे ग्रंथ भी वितरण करते हैं, भगवद गीता और अन्य ग्रंथ. But to sell book there, it's different than here. लेकिन वहाँ पर जो पुस्तक वितरण करना है वो यहाँ भारत से अलग है. I was just 2 days ago coming from Puri to Bhopal by train, and we took with Sabyasachi Prabhu a big bag of books with us. तो मैं जगन्नाथपुरी से भोपाल हम आ रहे थे कुछ दिन पहले ट्रेन में, सव्यसाची प्रभु के साथ में था और हमारे पास पूरा एक बैग था पुस्तकों का. And here I just, I say Hare Krishna, I'm a monk, ISKCON devotee, I Bhagavad Gita, and they immediately know what I'm speaking about. And in just in 1 hour all books were gone. तो मैं लोगों को मिलता था, हाथ जोड़ता था, बताता था मैं एक मंक हूँ हरे कृष्णा से, ISKCON से. तो लोग बहुत खुश होते थे और थोड़ी समय में हमारे सारे ग्रंथ वितरण हो गए. In Czech, I would have to stay there like for 6-7 hours to distribute the same amount of books.
और अगर मैं वहीं चेक रिपब्लिक में होता तो उतने पुस्तक बांटने के लिए मुझे 6-7 घंटे लग जाते. But the devotees, the people who really join, they become quite serious. लेकिन फिर जो भक्त पुस्तक पढ़ के और फिर ज्वाइन होते हैं तो बहुत ही वो गंभीर होते हैं. And we have nice community of devotees of Krishna in our place. तो हमारे वहाँ पे बहुत ही सुंदर समुदाय है भक्तों का. We have a preaching center in the city and we have a farm community of full-time devotees living there. तो हमारा एक शहर में भी प्रचार केंद्र है और एक फार्म कम्युनिटी है. Farm community means families with children also, and all devotees with dhoti, saris, and worshipping Krishna together, growing food for Krishna, like that. तो कृष्ण समुदाय मतलब तो कई सारे परिवार हैं जिनके बच्चे भी और वो सब मिलके कृष्ण भक्ति कर रहे हैं. So, sir, one more question. That's up to you. कहीं और किसी का प्रश्न है? You decide. Anyway, I hear you. Hare Krishna Prabhuji. As I am a young student and I have two options, that one is spiritual success and the another one is material success, and I generally confuses that which one I have to choose. Okay. So because for my family I need material success, and to find myself I need also spiritual success. So I want to find a middle way, that how I can achieve both. प्रश्न है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरे पास दो विकल्प हैं, तो या तो भौतिक सफलता या फिर आध्यात्मिक सफलता. So you are saying you have two options, but actually you want the third option. मुझे दोनों के बीच का रास्ता बताइए, तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? That's difficult one. तो ये तो कठिन प्रश्न है. Of course, it's not that when you go for the spiritual success, you will not get any material success. तो ऐसा नहीं कि अगर आप आध्यात्मिक सफलता के पीछे जाएंगे तो आपको भौतिक सफलता मिलेगी नहीं. But you will get the spiritual success only if you understand that material success is not success. लेकिन आपको आध्यात्मिक सफलता तब मिलेगी जब आप समझोगे कि भौतिक सफलता तो कुछ सफलता है ही नहीं. It's just a necessity that you need to feed your body and you need to live somewhere, so you have to be successful in some way. You have to earn some money, for example. तो भौतिक सफलता जैसी कोई चीज नहीं, आवश्यकताएं हैं शरीर की, शरीर निर्वाह करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब भौतिक. So how old are you? आपकी एज 21. 21. Good. So what do you think I will advise you? तो आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझसे? What do you think? When I read Bhagavad Gita, Yeah. one chapter was Karma Yoga, and in starting I was not understood to Bhagavad Gita, and I read a Karma Yoga book of Swami Vivekananda. Then I get some clarity about Karma Yoga, and that was that you have to completely devote it to yourself towards Sri Krishna and do your work, remembering the God. Okay. So little correction. You don't devote to yourself to Lord Krishna. There is a difference between us and Krishna. So we devote our life to Krishna, and in this way we can also realize who we are, that we are eternal servant of Krishna. तो हमें समझना है कि हमें डिवोट होना है कृष्ण के प्रति, स्वयं के प्रति नहीं, क्योंकि हम और कृष्ण अलग अलग हैं. हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं. So the spiritual aspect of life is much more important than the material aspect of life. तो जो आध्यात्मिक पहलू है वो भौतिक पहलू की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. Even if you are the biggest, the most successful, materially successful person in this world, you are a loser. तो अगर आप भौतिक दृष्टि से कितने भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आप ठगे गए, कुछ आपको मिला नहीं. Everything you have to leave here. You cannot take anything with you. तो सब कुछ आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते. But if you are spiritually successful, then you really gain
something. लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से आपने सफलता प्राप्त की तो वास्तविक कुछ गेन किया आपने। Go for spiritual success. तो इसलिए आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करें। And in between, maybe you will be materially successful also. तो हो सकता है उसको पाने के आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के मार्ग में आपको भौतिक सफलता मिल जाए। In that case, use your material success to enhance your spiritual life. तो उस भौतिक सफलता का भी प्रयोग करिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। And how you do it is that if you have money, then you use them for worshipping of Krishna. तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको धन मिल रहा है तो उसका प्रयोग करिए भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। Or if you have influence of, about many people, then you can tell them about Krishna. और यदि आप प्रभावशाली हैं, आपका कुछ नाम है, तो फिर आप लोगों को कृष्ण के बारे में बताइए। And if you lose the money, you still have Krishna. मान लो आपके पास पैसा नहीं बचा, पैसा खो भी गया, लेकिन कृष्ण तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। And this will be your success. और ये आपकी वास्तविक सफलता है। I never had my money. मेरे पास तो कभी कुछ पैसा नहीं रहा। And do I look unhappy? तो क्या आप मुझे लगता है कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ? It's a blissful life. तो बहुत ही सुखमय Krishna is जीवन है। taking care of us. कृष्ण हमारा ध्यान रख रहे हैं। And He will help us. Help us. वो हमारी सहायता करेंगे। He will provide. भगवान सब कुछ प्रदान If करेंगे। we give our life to Him, He will give His life to us. तो यदि हम कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे तो वो भी He will reciprocate. भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। The main reciprocation is that we will have this exchange with Him. We will serve Him and we will feel the spiritual transcendental happiness. यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। Okay, I am 2 minutes over time. तो मैं 2 मिनट ऊपर हो गया। Thank you so much. Thank you to all of you. आप सबका धन्यवाद। Nice. Hare Krishna. Shla Prabhupada ki jai. संकीर्तन प्रभु की जय।